Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue after our chapter 13 fields and fences. तो fields and fences, fields मतलब farm जो खेत होते हैं और fences मतलब उसकी जो border जो बनाई जाती है कि कोई animals field के अंदर चला ना जाए, इसलिए fences बनाई हुई होती है, उसके ऊपर wire लगाए हुए होते हैं. तो वो किस तरह से measurement करके, क्योंकि हम बिना measurement के तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, तो कैसे मेजरमेंट करके फेंसिंग की जाती है वो इस चैप्टर से हम सीखेंगे. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. Introduction. Rahmat is a farmer. He grows wheat in his field. Rahmat says, I need a fence around my field. How much wire should I buy? Rahmat needs to know the length of the boundary of his field. Can we find it from the picture given here? See, the length of each side is written near it. To find the length of the boundary of Rahmat's field, we will add the lengths of the sides. 9 meter plus 15 meter plus 21 meter plus 9 meter. The sum is 54 meter. Rahmat says, the boundary of my field is 54 meter long. Rahmat bought a roll of 70 meter wire for the fence. Looking at what Rahmat did, Ganpat thought, I should also do the same for my field. So, he asked Rahmat, can you give me the wire that is left with you? I will use it for my field. Rahmat said, oh sure, why not? How much wire did Rahmat give to Ganpat? The total length of wire that Rahmat had is 70 meter. So, subtracting 54 meter, which is the length of the boundary of Rahmat's field, from 70 meter, we get 16 meter. Hence, Rahmat gave 16 meter wire left with him to Ganpat. Ganpat thanked Rahmat and started fencing his field. But he needed more wire. The picture of Ganpat's field is shown here. The length of each side is written near it. How long is the boundary of Ganpat's field? Solution. The length of the boundary of Ganpat's field is equal to 15 meter plus 9 meter plus 18 meter plus 9 meter plus 15 meter, that is equal to 66 meter. So, the length of the boundary of Ganpat's field is 66 meter. 2. How much more wire will Ganpat need for his field? Here's the solution. The length of the boundary of Ganpat's field is 66 meter. Subtracting 16 meter, which is the wire that Ganpat already has, from 66 meter, we get 50 meter. Hence, Ganpat. देखो यहाँ पे आपको ये चीज, वैसे ये सारे सम हमने ऑलरेडी बोर्ड पे कर दिए, बट आप समझो चीज को. फील्ड्स एंड फेंसिंग होता क्या है, दैट्स व्हाई आई एम से दिखा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से क्या होता है. यहाँ पे रहमत
but needs 50 meter more wide. Practice. 1. The pictures of some more fields are given here. Find out which one has the longest boundary. A. Here, the length of each side of the field is given. To find the length of the boundary, let's add the lengths of all the sides. That is 6 meter plus 15 meter plus 24 meter plus 15 meter. That is equal to 60 meter. So, the boundary of field A is 60 meter. B. Look at the length of each side given here. To find the boundary, add the lengths of all these sides. So, the boundary is equal to 6 meter plus 9 meter. Hence, the boundary of field B is 42 meter. See, the lengths of the sides are given here. To find the length of the boundary, add 12 meter, 15 meter and 9 meter. With 6 meters, the boundary of field C is 36 meter. D. Here also, the length of each side of the field is given. To find, add meter, 9 meter. That is equal to, therefore, the boundary of field D is 78 meter. Thus, the length of the boundaries of the given 4 fields are 60 meter, 42 meter, 36 meter and 78 meter respectively. Among them, field D has the longest boundary. Two. Chandu's father is called the young old man in his village. At 70 years of age, he is fully fit. Do you know around the field every day, he takes 4 rounds of Chandu's field. Here, the picture of Chandu's field is shown. What is the total distance he covers? Solution. The lengths of the 4 sides of the field are given to be 100 meter, 150 meter, 100 meter and 150 meter. If we add them, we get 500 meter. Thus, the length of the boundary of Chandu's field is 500 meter. Now, to find the total distance covered by Chandu's father, we will have to multiply 500 by 4. We get 2000 meter. We know that 1000 meter is equal to 1 kilometer. So, 2000 meter is equal to 2 kilometer. Hence, Chandu's father covers a distance of 2 kilometer every day. 3. Ganpat's wife works in a tailor's lathe. Look at the cloth given here and tell how much lace is used for 1 tablecloth. देखो प्रीवियस पीरियड में हमने ये ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी कर दिया है ओके कि गणपत's wife work in a tailor shop. She has to fix lace around the tablecloth. She bought a 100-meter roll of lace. Look at the picture and the tablecloth given here and tell how much lace is used for 1 tablecloth. यहाँ पर tablecloth दिया हुआ है उसकी lace मतलब उसकी जो border line में जो होती है तो सेम हियर
Solution. Here, the lengths of the sides of the tablecloth are given. We know 1 meter is equal to 100 centimeter. So, 1 meter 50 centimeter is equal to 150 centimeter. Here, the four sides of the tablecloth are 150 centimeter, 50 centimeter, 150 centimeter and 50 centimeter. To find the total length of the tablecloth, we will add the lengths of all the sides. The total length is 400 centimeter. 400 centimeter when converted to meter, we get 4 meter. Hence, 4 meter lace is used for one tablecloth. 1. How much lace will be used for 3 such tablecloths? For fixing a lace around one tablecloth, 4 meter lace is used. Then, for fixing the lace around 3 tablecloths, we require 4 into 3, that is equal to 12 meter lace. Hence, 12 meter lace will be used in 3 such tablecloths. 2. How much lace will be left in the roll? Solution. The roll of lace is of 100 meter. Out of 100 meter, 12 meter lace is used in 3 tablecloths. So, the lace left is equal to 100 minus 12. That is equal to 88 meter. Therefore, 88 meter lace will be left in the roll. Activity. Find out the length of the boundary of the shapes shown here. ये हमारा बाकी है ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको यहाँ प्रॉपर से देख लेना है. ओके, आपके टेक्स्ट में सेम चीज है. Place it देखो यहाँ along से the boundary of shape A, like this. Cut the extra thread. Now, straighten the thread and measure its length. देखो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया थ्रेड लेनी. थ्रेड मतलब धागा, कोई भी सिंपल सा धागा लेना है. आपकी टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको जो भी बॉर्डर है वहाँ पे आपको थ्रेड इस तरह से रखनी है, देन कट कर देना है. ओके, फिर वो थ्रेड को स्ट्रेट करके देखना है कि वो कितने सेंटीमीटर, स्केल से मेजर करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा. तो ये एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप शो हियर. ओके, तो वो आपको अपने आप सेल्फ स्टडी करनी है एकदम अच्छे से कि थ्रेड लेके आपको बाउंड्री के ऊपर रख के फिर कट करके मेजर करके चेक करना है. ओके, कंटिन्यू करते हैं. Length. देखो स्केल से इस तरह से चेक करना है. ओके, तो ये होगा It is 11 सेंटीमीटर. 11 centimeter. So, the boundary of shape A is 11 centimeter. In the same manner, measure the boundary of shape B, which is found to be 13 centimeter. The boundary of shape C is 12 centimeter and the boundary of shape D is 10 centimeter. Now, count the squares in the given shapes and answer the questions given here. Note, to count the squares, count the squares which are bigger than half as one complete square. Count 2 half squares as one complete square. Do not count the squares which are less than half of a square.
In shape A, there is one complete square. The number of squares bigger than half is equal to 3. And there are two half squares. So, there are 1 plus 3 plus 2 into 1 upon 2. That is equal to 1 plus 3 plus 1, which is equal to 5 squares. In shape B, there are 3 complete squares in all. The number of squares bigger than half is 3, and the number of half squares is 2. So there are total 3 plus 3 plus 2 into 1 upon 2. That is equal to 3 plus 3 plus 1, which is equal to 7 squares. In shape C, there are 3 complete squares. The number of squares bigger than half is 2, and the number of half squares is 2. Thus, the total number of squares in shape C is equal to 3 plus 2 plus 2 into 1 upon 2. That is equal to 3 plus 2 plus 1, which is equal to 6. देखो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझना है क्या है रूल क्या है नॉट काउंट द स्क्वायर स्क्वायर को किस तरह से काउंट करना है काउंट द स्क्वायर्स व्हिच आर बिगर देन हाफ एज वन कंप्लीट स्क्वायर हाफ से ज्यादा दिख रहा है वो वैसा देखो स्क्वायर मतलब यहाँ पे पीछे जो लाइट ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो तो स्क्वायर यहाँ पे वन कंप्लीट स्क्वायर है बाकी सारे हाफ हाफ दिख रहे हैं ओके तो वो यहाँ पे क्या है काउंट टू हाफ स्क्वायर एज वन कंप्लीट स्क्वायर तो टू हाफ स्क्वायर दैट मींस वन कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा हाफ प्लस हाफ दैट मींस वन कंप्लीट हो जाएगा डू नॉट काउंट द स्क्वायर व्हिच आर लेस देन हाफ और स्क्वायर तो ऐसे स्क्वायर को हमें काउंट ही नहीं करना है जैसे यहाँ पे देखो इतना छोटा छोटा जो हाफ से भी कम हो ऐसे स्क्वायर्स को डू नॉट काउंट द स्क्वायर व्हिच आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर हाफ से भी कम है वैसे स्क्वायर को हमें काउंट ही नहीं करना यहाँ पे सी का यहाँ पे ए एंड बी का आपने देख लिया होगा सी का है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर तो कितने हैं तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 जो है वो 3 कॉम्प्लेक्स स्क्वायर है देन नंबर ऑफ स्क्वायर बिगर देन हाफ से थोड़े बड़े हैं वैसे वाले कितने स्क्वायर है तो 2 देन नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितने हैं तो 2 द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन शेप सी 3 plus 2 plus 2 divide half मतलब ये जो है 2 multiply half that means 2 square half है ओके इसलिए half plus half तो 1 कंप्लीट हो जाएगा ओके 3 plus 2 plus 1 is equal to 6 square that means C shapes के स्क्वायर है टोटल 6 ओके ऐसे यहाँ पे भी आप देखिए तो 2 जो है 1 and 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर है देन यहाँ पे ये इतना जो पॉइंट है छोटा सा 1 and 2 ये स्क्वायर में काउंट होगा ही नहीं देन हाफ स्क्वायर कितने हैं तो 1 and 2 हाफ स्क्वायर है एंड इससे भी स्मॉल स्क्वायर है और तो वो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं ओके Shape D. In this shape, there are 2 complete squares and 2 squares bigger than half. So, the total number of squares in shape D is equal to 2 plus 2, that is equal to 4. 1. Which shape covers the least number of squares? In shape D, there are only 4 squares, which is the least number among all these shapes. 2. Which shape covers the most number of squares? Shape B covers the most number of squares, which is 7. Self-study.
Take a 20 centimeter long thread. Make different shapes by joining the ends. Place them on the given squared sheet. Find out how many squares are there in each shape. Which is the biggest shape? Which is the smallest shape? How long is the boundary of each shape? ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ओके? How many different shapes can you make by joining two squares? Draw them on the square sheet given here. How long is the boundary of each shape? Solution. By joining two squares, we can make 4 different shapes. The boundary of shape A is 8 centimeter. The boundary of shape B is 8 centimeter. The boundary of shape C and shape D is 6 centimeter each. Example. Try this activity with 3 squares also. Solution. The shapes made by using 3 squares are shown here. See here. The boundary of shapes A, B, C, D, E and F is 8 centimeter each. देखो, ट्राई दिस एक्टिविटी विद 3 स्क्वायर. आगे जो था वो 2 स्क्वायर को लेके, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर तो 3 3 ही यूज हो रहे हैं, फिर बाउंड्री लाइन में क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं. तो जैसे स्ट्रेट जा रहे हो एंड आप बीच में से आ रहे हो, जैसे ये जो है सीधा, ओके? तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो 3 + 3 6 7 एंड 8 सेंटीमीटर होगा. बट जहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का होता है, तो ये रास्ता, मतलब आप समझ लो सिंपल सा कि ये कोई रोड है, आप सीधे जा रहे हो, अदरवाइज आप कोई बीच में से कोई मिडल वाला रास्ता लेके जाओगे तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. तो सेम हियर, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा. जबकि जहाँ पे सीधा है, ये है वो 8 सेंटीमीटर आएगा कि ए बाउंड्री है. यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ब्लैंक है, इस तरह का चार्ट दिया हुआ है, वहाँ पे आपको 3 स्क्वायर को लेके एक बनाना है इस तरह का चार्ट. तो ये 3 शेप स्ट्रेट बन गए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन, फिर इस तरह से 3, इस तरह से. तो ये 3 शेप्स को आपको पहले तो क्या करना है, शेड कर देना है. देन 1 स्क्वायर 1 लाइन, दैट मींस 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे वो 1 3 इस तरह से किया हुआ है, तो 8 8 8, मतलब ए जो हाईलाइट हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, जो है वो बाउंड्री जो है वो 8 सेंटीमीटर है. जबकि जी एंड एच की जो बाउंड्री लाइन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो एवरी साइड से हमें 1 1 काउंट करना पड़ेगा. ओके, तो वो बाउंड्री लाइन चेंज होती जाएगी. कंटिन्यू करते हैं. While the length of shapes G and H is 12 centimeter each. Practice. Example. A square has a boundary of 12 centimeter. A. From the corner of this square, a small square on side 1 is cut off. Will the boundary of B be less or more? Find its length. The length of the boundary of shape B is equal to 2 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter plus 2 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter, which is equal to 12 centimeter.
The boundary of B is 12 centimeter, which is the same as the given square. B. If you cut a 1 centimeter square to get shape C, what will be the length of the boundary of C? The length of the boundary of shape C is equal to 1 centimeter plus 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 3 centimeter plus 3 centimeter plus 3 centimeter. That is equal to 14 centimeter. देखो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो स्क्वायर सेम है, यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या किया, जैसे आगे वाला जो था वहाँ पे हमने साइड से स्क्वायर कट किया था, ओके, तो वहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर कट हो गया। बट यहाँ पे मिडल से क्या आप सोच लो कि आपका स्ट्रेट रास्ता था, उसमें क्या हो गया कि बीच वाला रास्ता बंद हो गया, आपको पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ का 1 सेंटीमीटर, ये और ये, तो टोटल यहाँ पे 3 की जगह 5 सेंटीमीटर आपके बढ़ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर आपके बढ़ जाएंगे। देन आप ऐड करोगे 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ओवरऑल जो है वो टोटल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, जबकि ये क्या है 12 सेंटीमीटर, तो आपका 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस मतलब ये चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। Example A. Find the length of the boundary of square D. Solution. On adding the given length of each side of the given square, we get the length of the boundary of square D to be 20 centimeter. So, the length of the boundary of square D is 20 centimeter. B. 8 squares of side 1 centimeter are cut out of the square D. Now it looks like shape E. देखो यहाँ पे That is कितना the सारा length of the चेंज हो रहा boundary है of shape E. कि कहाँ से 1 2 3 4 Solution. 5 6 7 8 9 10 To find the length of the boundary सारे of shape वन E, ऐड होते जाएंगे। let's add the length of each side. The length obtained is 36 centimeter. Thus, the length of the boundary of shape E is 36 centimeter. C. The boundary of the square of 1 centimeter is 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter plus 1 centimeter. That is equal to 4 centimeter. Can we also say that the boundary is 4 into 1 centimeter? Solution. Yes, it is 4 into 1 centimeter. Example. A hockey field is 91 meter 40 centimeter long and 55 meter wide. How long is the boundary of the field? आज का ये पीरियड यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आज हमने बाउंड्री कैसे काउंट करते हैं वो हमने सीखा, जहाँ पे